गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मनोज। सर मेरे कुछ डाउट्स थे, अगर इस ड्यूरिंग वी कैन कवर अप दैट, मतलब कुछ पॉइंट्स थे जो आपसे क्लैरिफाई करना चाहता था रिगार्डिंग मैक्रोस। मैक्रोस अनुज, एक काम करो, कल ना फिर एक काम करना, 1 घंटे पहले लॉगिन कर लेना, 12 से 1 के बीच में मैं कल फ्री हूँ, ठीक है ना। ओके सर। और भी कोई डाउट ओके, होते हैं ना, साथ साथ ही कर लेंगे हम, ठीक है ना। ठीक है सर, फैंटास्टिक, थैंक यू। तो all right, so let's begin. I think the people have already joined in, so let me start sharing my screen. All right, so before beginning the tableau session, right, I'm going to describe what the data visualization is, because learning a software doesn't solve the purpose of understanding the data visualization. So understanding this concept, which is visualization, right, is must, so that tomorrow if you're working either on Tableau or Power BI or ClickSense, any tool, you will be able to utilize that tool in a best way. All right, so a quick introduction to the agenda. So we will discuss what is visualization, and we will see some real world examples and why visualization, history of visualization, and benefit of data visualization. We will also pay attention to key elements, right? Type of visualization, comparison of visualization, and we will also discuss tips for effective visualization. And then will move on to the Tableau and how you can use Tableau with practical examples. All right, I think you have seen this picture before, right? And I'm putting this picture again because he is the one who is a proponent of using unseen thing with the help of visualization. So he has mentioned that exploratory data analysis can never be the whole story, right? But nothing else can survive the foundation stone. And why we require this foundation stone? Because to take our decision, if that is supported by some insight, people are going to make a good decision, a right decision, a better decision, right? So data visualization help people see and understand their data. So what data visualization help? It helps people to see and understand their data. What does that mean? And I would appreciate if you can just participate, right? So
that will make this lecture more fruitful, right? So what do you understand that people help people to see and understand their data? So sometimes numbers can be misleading. So by plotting them or visualizing with them, you understand or can interpret them better. Okay, And this is just yeah, this is one point, right? So But just if you like in that our capstone projects, there are like more than 8 lakh records. So just by seeing the number, we can't interpret Mhm. anything. Okay, So in that place, visualization helps like good role. okay. If you pay attention to the last, help people see and understand their data. So if you're tomorrow working in any organization, right, you're not making those dashboards, those reports for your own consumption, right? You are making for someone who is doing that kind of task, that kind of activities, and they are the end user and they are the one who is producing that data. All right. So you help them to understand that data, which the number by number they cannot make any interpretation or take a good decision, right? Or at times it is very confusing for people that who are not very good with the numbers. But with the help of pictures, it is pretty easy, right? With this, let me just quickly take you to a slide. So this slide which I prepared for this is outcome of a research, right, which I did for this particular topic, and I would like discussion around each point which I have written on the slide. So data is nothing new. What does that mean? So we are learning this. So we are here for a topic by name of data visualization, and I am saying that data is nothing new. What does that mean with respect to visualization? Any thought, any comments would be appreciated. so all the data types and everything is defined and restricted. So so the raw data which we have will have nothing new in that. So ultimately we would try and convert them in the form of data types which we require and which we can comprehend easily. So the raw data itself has nothing new to serve, something like that. If I That's my So interpretation. Anuj, let me just give you a quick idea about this, right? Uh, just hold on a second. This number, I'm not sure whether it's a student or not. Hello. All right. So when I'm saying with respect to visualization, why everyone is talking about the data visualization now, right? And when we already had data historically, and why everyone is talking about now? So the reason for this, yes, data is new. There is nothing new about the data, but there are few things which has made this data visualization more important nowadays because of the abundance of the data, Volume of the data. the volume of the data, right? So historically, yes, the data was there, but just think of a scenario. The 10-year back, how much amount of data you were generating? You only had some few digital footprint, maybe on Gmail, maybe on Facebook, right? But now everything do in your life, most of the things are being
digitally footprinted. For example, starting from your daily activities, your phone, that phone knows better than you that, what is your time when you go out of your home, when you drive your car, when you go to a particular restaurant, whether you go to your office, you know. So the amount of data that a small device which you contain in your hand is generating is humongous, right? Similarly, just take an example of banks. 10-year back, right, your digital footprint was very less as compared to today. I can vouch for this that among this lot, right, who is present over here, hardly you are visiting your branch once in a month. Not even that, right? I hardly remember when I visited my last. So last 5 years, yes, yes, yes. And surprisingly, Hemanji, even I don't know. So I have two accounts. So one particular account, the salary account, I even don't know where is the branch office, right? So that kind of services or the or the digital technology we are consuming nowadays, that we have no physical contact with the branches, right? And this is creating a new economy which is very well supported by the data. And to, now to make use of this data, we are using this new age technologies or new age tools. And the second one which you can see on the screen, that technology has made storage collection extremely easy. What does that mean? Now, if we go back to the history again, right? It is very hard to store data which are not formatted. Or historically, you will see that find that there is a very less type of data which we can store. Nowadays, everything is being stored, whether it is your picture, your comments, your different languages, different emoticons which you are creating, right? That is being stored, right? So the collection is easy. However, at the same point of time, the data storage became cheaper. Now you think about the laptop which you are using right now, and the money which you have, you know, the money which you have spent to buy this 500 GB or 1 TB laptop is equivalent to the laptop which you have bought 10 years back with a 50 or 100 GB laptop with 2 GB RAM. Now your processing and the storage both have become cheaper. So जो 10 साल पहले आपने लैपटॉप खरीदा है, मेरे को याद है. So I bought a laptop for 42,000 rupees in year 2006 or 7. I'm not able to recall exactly. 42,000 2006 में मैंने spend किए थे. If you take the value of money right now, तो कितना पैसा हो चुका होगा वो, अगर मैं सिर्फ बैंक की एफडी में डालता तो what will be the time value of that money? हेमंत जी, आप शायद आंसर कर पाओगे अच्छे से. अगर मैंने 42,000 रुपये उस समय खर्च किया था, तो आज के हिसाब से कितना पैसा होना चाहिए? मोटा मोटा केस 1.5-2 लाख रुपए के आसपास, अप्रोक्स 4 टाइम, राइट? यानी 2 लाख रुपए अगर मैं उस टाइम वैल्यू को कैलकुलेट, ओ बाप रे बाप, आप तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता दी सर. 1,08,000 रुपए
राइट। अब आज की तारीख में 1,08,000 रुपए का आप लैपटॉप खरीदोगे, आप क्या खरीद सकते हो? आप मैक खरीद सकते हो, राइट। उस वक्त मैंने एक एचपी का लैपटॉप खरीदा, दैट टू अ रैम ऑफ 512 MB, 512 MB टॉप एंड लैपटॉप था मेरे पास उस टाइम का, विद अ हार्ड ड्राइव ऑफ 40 GB। और आज उस पैसे में मैं क्या परचेज कर सकता हूँ? आज के टाइम पे अगर मैं रैम की बात करूं, कम से कम 10 टाइम्स हो चुकी होगी, मे बी मोर देन दैट। हार्ड ड्राइव 10 टाइम्स। तो मेरा स्टोरेज प्रोसेसिंग बहुत सस्ता हो गया, right? Now the third way in which data in the right hand can communicate a wealth of information. What is the meaning of this? Anyone, any comment, any thought would be appreciated. देखो, इस सेशन का मजा तभी जब आप लोग पार्टिसिपेट करो, बिकॉज यू नो ये कोई मैं आपको कोई फिक्स फॉर्मेट कंटेंट नहीं दे रहा हूँ। दिस इज मोर ऑन विजुअलाइजेशन। जब मैं टैबलू पढ़ाऊंगा देन देयर विल बी अ स्टैंडर्ड थिंग्स, राइट। सो हम अभी बात कर रहे हैं विजुअलाइजेशन, और विजुअलाइजेशन का मतलब टेलिंग स्टोरीज, राइट। अब जब तक वो नहीं आएगा समझ में, तो आपको विजुअलाइजेशन सीखना बेकार है, क्योंकि आप टूल सीख लोगे और उस टूल के पे यूज होने वाले आर्ट से आप महरूम रह जाओगे। So basically, every data or whatever variables we have, if there would be some pivot points around which we would like to build our case or story. So if that is decoded properly, then that could lead to a particular pattern or uh, interpretation which we are looking for in the data. So if we are able to decipher that properly, that can lead to uh, the wealth of the information. Hmm, So thank you, basically, Anuj, for it. we are trying to get into the center of the data or the core of the data with the whatever patterns, variations which are present in the data set. That is the objective. So that we can make predictions and forecasting and whatever the case may be accordingly. So the that in visualization especially, if I give you the same data to you and the 10 different students in the class, I can get 10 different stories, right? Now, out of these 10 different stories, one story would, or 10 out of 10 stories, 8 stories would have a wealth of information which can be leveraged to better uh, the current scenario, better the sales, better the production, better the any decision which you want to take regarding anything. For example, how my you have seen this feature in iPhone. I'm not sure whether how many of you are using. Maybe it is now. I think this feature is everywhere. They have started giving you a weekly summary, right? Your user summary. I think Android has also started giving you. So the data which they have collected on my uses, right? With the help of that data, they have now started communicating with me. Okay, this is how you are consuming or you are using your cell phone. Now, what is in it for me? What is a big deal? तो कोई भी कर सकता, but किसी ने किया नहीं. So this iOS team has developed this feature first, right? And this helped me, but especially talk about me a lot. My, uh,
the consumption of social media has gone drastically down once the day I have seen that visual, that particular report. So the data which were there in their hand, so they were able to communicate the information which is very wealthy for me. So I have, for example, if I am using social media for 4 hours in a month or in a week, sorry, that's too much for me, right? So what I did, I bring it down to 1 hour in a week. That's 3 hours of saving of my time. That's a very wealthy information for me in those small graphs, right? Similarly, in your organization, data is there in abundance, right? बहुत data है आसपास, जहां भी देखो data है. If you are able, or if the data gets into the hand of the right people, right people means the people who can torture that data enough, right? So people who can torture that data enough, it will reveal such a wealth of information that could help you a lot. I'm not sure if I've told you a story of the login hours. So one of my training, I have given this task to the participant that they need to just simply draw an histogram of the logins of their team, and they need to get back to me with that particular exercise. Till date, no one has turned back. 2 साल हो गए ट्रेनिंग को करे हुए. लोगों को मैंने सिर्फ इतना बोला, अपनी अपनी टीम के जो मैनेजर थे, अपनी टीम के लोगों का लॉगिन आवर्स को सिर्फ ग्राफ बना करके आ जाओ. पता क्यों नहीं? उनको बनाना नहीं आता, ऐसा नहीं था. The day they have seen the pattern, right, they were shocked, because now the data was in the right hand. जो डेटा पहले मेरे सर्वर में पड़ा होता, अब वो सही जगह लोगों के हाथ में है, जिससे वो लोग डिसीजन ले सकते थे, राइट? जहां लॉग इन आवर्स लोगों को 6 घंटे आ रहे थे, आज वो 8 घंटे हो चुके हैं. प्रोडक्टिविटी भी बढ़ चुकी है टीमों की. स्मॉल, जस्ट स्मॉल थिंग, डेटा इन द राइट हैंड. जिसको वो डेटा यूज करना था उसके हाथ में गया, अदरवाइज तो वो डेटा तो सर्वर में पड़ा हुआ था. And the best way to understand data is through visualization means, yes, why I have used histogram, not any other thing, because that is the best way to make anyone understand their data. And this is how a human being learns more easily. और यही रीजन है कि आपको जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है, लोगों की कोशिश होती है आपको विजुअलाइजेशन के थ्रू कर, चाहे वो आपके रेड लाइट पे लगा हुआ, आपके क्रॉसिंग पे लगा हुआ रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट का सिंबल हो, या किसी बड़े ब्रांड का बड़ा सा लगा हुआ होर्डिंग हो. दोज ऑल आर ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड the message which they want to communicate with the help of visualization. So I think I have given you enough context, regarding visualization. So let me quickly move on to the next thing which I would like to discuss with you. And I'm going to show you some real world example of the things. कभी नाम पे आपने एनालिटिक्स देखा है? कभी कुछ देखा नाम पे? नहीं, तो कुछ नहीं देखा. So during my research, I found this beautiful website.
right, which has data from 1880 still to 2019. So अभी आपके चैट विंडो में मिनिमाइज करके आप कुछ भी टाइप करोगे वो नजर नहीं आएगा. So if you click anywhere, you can see a trend how this name is trending. With the rank. Right? The moment you type a letter, it will show you the trend which are the most popular name in that particular, around that particular college. So there was a name. Lady Diana, I think most of you remember. That name was very popular in it. In this. So Hevanji, this is a US or UK data, right? Not Indian. This is सारे में ऐसे कि जेनिफर, जेसन, जॉन, जी. Right? And it will show you how over the year that the trending has changed. So 80 में rank 3 था, right? उस नाम को आज कौन पूछ रहा है? आज भी इतना पॉपुलर नहीं है, रैंक 4 है, 17 में भी वो जेम्स. Yes, we see a lot. सबसे पॉपुलर नेम हुआ करता था 50s का जेम्स बॉन्ड. जहां से टाइप में करते मूवीज बनना चालू हुई थी जेम्स बॉन्ड. यही रीजन था उन्होंने जेम्स नाम को पिक किया एज द मोस्ट पॉपुलर नेम. जैसे इंडिया के अंदर 90s के अंदर सबका नाम राहुल होना मैंडेटरी था, तो मूवीज के अंदर राहुल ही दिखता था, या वाइस वर्सा. मूवी में राहुल पॉपुलर था तो लोगों ने राहुल रखना बहुत पसंद किया. Right? So now you can understand the power of visualization, right? And there is no limit, there is no fixed ground that okay, you can do this much only. Let me show you another beautiful graph which I like the most. Most simplest graph which I have ever seen, and that contains a wealth of information. Do you see the heading? The jobless rate for people like me. So unemployment rate 12-month average ending September 2000. ये डेटा उस पर मिला जब यूएस रिसेशन का टाइम था, राइट? You can check, white people are less affected than black people, right? Then Hispanic, then all other races. You can see how the the jobless rate was how that jobless rate was as per which जिन लोगों की एज 50 to 24 के बीच में थी, जो जनरली जो रिटेल मॉल या डोमिनोज टाइप की जॉब करते होंगे, अगेन माय अजम्पशन, आई माइट बी रॉन्ग, उन लोगों के लिए जॉब बचाना बहुत मुश्किल है वर्सेस उनके जिनका एज 45 एंड ओल्डर है. So the worst affected were these people who are on temp kind of role
or in the beginning of the career. Let's see how are the job sorry unemployment rate for the people who are college graduate. It is far less with compared to high school graduate. The people who are not high school even graduate, the jobless rate, unemployment rate are very high. You can click anywhere and you will get to know. Especially black women aged 20 to 24 with a college degree, how they have performed year on year, how their unemployment rate was there year on year. You click anywhere on this graph, you will have a wealth of information, right? And this is what the visualization is. Another fantastic graph which I would like to share with you is the Netflix. So you all know that Netflix was into this movie rental business before coming into this OTT business, right? By the way, what is the full form of OTT? Over the किसको पता है OTT? लगता है कोई भी नहीं Netflix का over the top. Okay, on the over the top means दिशा मैंने समझा नहीं. On top of what? SEF definition. Sorry, I'm asking the wrong question. Over the top OTT. Okay. So Netflix has created this fantastic visualization just to see where the demand for a particular movie is high and where it is low, so that it can have inventory accordingly. And this contains the zip code versus the movie ranking, right? So this is the highest ranked movie, which is very much popular in all these cities, right? Top 12 cities. You can see alphabetically, you can see better. And this contains your data pointed by Netflix on top 50 renters in 2009 in each zip code. Titles are listed in the approximate order of popularity across selected metropolitan area. Metascore are from Metacritic.com. So they have used this score with some by creating some ratings, some critic rating. So what now if you want to see the Boston, so the most rented movie is LA. So for each zip code, the moment you and this again, the color again shows rank. Right, dark means 1, 50 means low.
So from there they get to know how they need to procure their movies, right? And what is the demand. All right, so this is small real world examples which I have taken just to show you that the variety of the analytics which the world has used. Why data visualization, right? And I found this quote from some yogi where I don't know who this guy is, but you can observe a lot just by watching. इस बात का मतलब क्या हुआ? Any thought, comment? So the people who are sitting on top, right? I mean, top means the people who are running the organization, who are taking strategic decision. Do you think you know, they go into the depth of everything, or they know that कि कौन कब login कर रहा है, कब login नहीं कर रहा है, right? What they see, they just observe the data which is presented to them, and they watch it, and they ask for those relevant questions which reveal everything. So they believe, So I remember, one of my stakeholder, when I share anything to him, he used to tell me, "Give me some time to absorb this." And I'm just, kind of a little curious, what he's talking about, why he want to absorb what he want to absorb, right? So, one fine day in 101, I asked this person that, I've observed that you always say whenever I present anything or whenever I share something, you say you need time to absorb this. What do you try to do? What is the exact meaning of observing or consuming this? So he told me that so whatever you are sharing, right, that is a single piece of information or in moment information, right? Now I try to absorb that particular information which you have shared just to see how I can connect this to my future requirement and how or what patterns were hidden which this particular report cannot tell me, right? Or what are the patterns which I can draw from this to make my current decision making better. So he tried to analyze everything. If this is happening, so he tried to, extrapolate thing like if this is happening, if this is thing, then what could be the reason? If this is happening, what could be the reason? Because there are so many factors, so many variables, so many combinations which you can plot with the help of data, which could affect your decision making. However, it might not be possible for someone to, to think or to break every factor in a particular dashboard or visualization. I hope I am making sense to you because I know it's little theoretical as compared to your previous sessions where you will be doing a lot of stuff. तो बीच में बोले थोड़े तो प्लीज बता देना मेरे को कि बोले थोड़ी है चलो थोड़ा अलग नंबर पे आए थे फिर से So this ends from quarter which I have shown you before. पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ ये, right?
याद है किसी को? वेरी गुड, किसी को तो याद है। So this also emphasizes why we need data visualization. So Mr. Francis Anscombe has demonstrated, the importance of graphic data before analyzing it and the effect of outline and other influential observation on statistical properties. So he described the article as being intended to counter the impression among statisticians that numerical calculation are exact or graphs are rough. And we have seen that, for this particular data, our mean was same, our sample variation. Okay, so I think the people from Jaipur were not able. Sorry, I got it. So people from Jaipur have not seen it before, right? So Dhananjay, if you look closely to this quartic, so my value for x is same for first three set. So x same for these Yes, three. sir. Y is different, and in fourth I only have 8 and 190. Yes, sir. तो एक मजेदार किस्सा, तो अब जयपुर वालों से पूछते तो थोड़ा पार्टिसिपेट करना। तो मीन ऑफ एक्स कितना है? 9, यानी सबका मीन कितना है? 9। 9. वेरिएंस सैंपल वेरिएंस भी उनका 11 है एग्जैक्ट, और y का भी मीन क्या है? 7.5। ऑल 4 केसेस जो भी मैं बता रहा हूँ सब ये चारों केसेस के लिए। कोरिलेशन भी धनंजय कितना है? 0.816, ठीक है, चारों का एक्स वाई Yes, के sir. बीच में। और लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन भी एक ही बन के आया, y = 3 + 0.5x। और Okay, sir. मजेदार बात है, कोफिशिएंट डिटरमिनेशन भी चारों का सेम है, विच इज 0.67। तो धनंजय अगर मैं कोई भी डेटा यूज करके अगर प्रेडिक्शन करूं तो बात एक ही है, तो सारी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज तो मिल रही है ना, Yes, sir. राइट? तो मैं चारों पर लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन फिट कर सकता हूं, राइट? Yes, sir. Okay. Now I have plotted this data and this is the graphical summary. अब बताओ कहां फिट करोगे? सर फोर्थ पे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पर आपका तो सारे मैट्रिक्स सही बोल रहे हैं। रिग्रेशन, वो इक्वेशन का कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन भी बढ़िया आ रहा है, कोरिलेशन भी सही आ रहा है, लेकिन यस सर, विजुअलाइजेशन ग्राफ ने आपका डिसीजन चेंज कर दिया। यस सर। एंड दिस गोज विद एवरीथिंग। ओके सर। So these are few lines which I have written for visualization, that you need not to be a graphic designer, ठीक है? तो आपको वो कलर कोडिंग वो सब स्केच करने आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको एक गुड विजुअलाइजर डेटा विजुअलाइजेशन में आपने अगर अपना करियर बनाना है, द बेस्ट वन, यू नीड नॉट टू बी पीएचडी इन स्टैटिस्टिक्स। तो जरूरी नहीं है आपको टिपिकल स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले आने चाहिए। What is required? You just need to be eager to learn. आपको बस सीखने की भूख होनी चाहिए, राइट? क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात? The more inquisitive mind you have, or more the question you have around data, the more answer you will get, right? जब तक डेटा से कुछ पकड़ के क्वेश्चन करोगे नहीं, ढूंढोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक वो एक डेड एंटिटी है मेरे हिसाब से। And my last take on visualization, have to practice to get
better. क्या करना होगा? Practice करना होगा to become better day by day. And I will show you few more fantastic, beautiful graphs, and that will define why I'm saying that practice to get it better. Two more point, which is visualization is not only about data. वैसे सिर्फ और सिर्फ डेटा की बात नहीं है. It is how you present it and design it that can help people to remember. ये बहुत बड़ी बात है. होता क्या है कि हम जल्दी के अंदर सिर्फ ग्राफ या जो भी विजुअलाइजेशन बनाते हैं उसके अंदर we just simply put numbers, put colors, and that's it. Right? That should not be the way you should work. You should approach visualization as if you are telling a story, because स्टोरी लोगों को याद रहती है. If someone tell you, and then this is a reason कि जो हम मूवीज वगैरह देखते हैं उसमें स्टोरी कही जाती है, राइट, और लोगों को सालों तक याद रहती है. And this is what the objective of a visualization, that people who are consuming your visualization or your dashboards, they should be able to retain that information for longer period of time. क्या होना चाहिए? उनके दिमाग के अंदर वो तस्वीर इतनी साफ छप जानी चाहिए that can help them for a longer period of time. और अगर आप ध्यान से देखो तो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो यही हो रहा है, that every advertisement is trying to put an impression on the brain, और यही काम आपको अपनी ऑफिस के अंदर करना है for your stakeholder who is going to consume your visualization. So visualization is not that new. कब से चालू हो चुका है? तो आप कुछ ऐसा नहीं करना. So we are not reinventing the wheel, right? Chart. लाइन चार्ट विद इकोनॉमिक डेटा विलियम प्लेफेयर ने ये डिजाइन किया था 1786. जो आप बार चार्ट आज बनाकर भी बड़े खुश होते हो, ये हमारे पूर्वज हमको बहुत पहले ही बना करके दे चुके. Another well thought of graph which is Nightingale Cox comb. Now she has developed this graph to communicate to the world that people are dying more from the disease, not with the battle in army. Beautifully, put in the number that okay, this is a total number of people who have died, that from disease, that from other causes, that from battle. तो ये जो ऑरेंज वाले सारे लोग इनकी डेथ हुई है बैटल के अंदर, तो बाकी जो आप लाइट ब्लू ऐसे कलर देखो दैट इज ड्यू टू डिजीज. पाई चार्ट विलियम प्लेफेयर बना चुके.
1801, the first geological map of England and Wales developed as standard for geological cartography. It is also known as a map that changed the world. So first visualization which has been leveraged, to take some decisions, right? So the original map by John Snow showing the clusters of cholera cases in the London epidemic of 1854 के अंदर लंदन के अंदर कोलेरा की बीमारी भयंकर रूप से फैलने लगी. And he showed that with the help of this graph, he was able to track the reason or to identify the root cause of the problem with this graph. And he showed that Southwark and Vauxhall two waterworks company was taking water from sewage polluted section of the Thames and delivering water to homes, leading to an increased incidence of cholera. Snow study was a major event in the history of public health and geography. It is regarded as the founding event of the science of epidemiology. With the help of simple graph, right? इतना पुराने टाइम में जब लोगों के पास कम्युनिकेशन तक के साधन नहीं होते थे, they were taking decisions with the help of visualization. If you look at this tagline, the best graphics ever made, so the French engineer Charles Mirandi had listed graphically the disaster campaign of Napoleon against Russia. तो जो नेपोलियन ने रशिया में जो चढ़ाई की थी उसको उसने ग्राफिकली प्रेजेंट किया. So a full-fledged war story in one graph. The entire journey in one graph. So if you look at this, let me just put quickly. If you look at this, so this color shows how many people have started or how many people were there, and then this black line shows how many people have returned. जिस हिसाब से यह चढ़ाई हुई थी, लोग बीच में कम होते चले गए, कम होते चले, कम होते चले, जब वापस लौटे तो वापसी भी कम होते 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 हम लोग यहाँ तक पहुंचे. सर ये एक्चुअली में लाइन ब्लैक लाइन शो करी जो लोग सरवाइव कर गए. सर्वाइव भी हो, राइट. ओके. जैसे यहाँ से कोई लोग इधर मुड़ गए तो ब्लैक ये लाइन शो कर रही है इतने लोग सर्वाइव किए. यहाँ से जैसे ये लोग यहाँ निकल गए थे, जो वापसी के टाइम पे इतने लोग ही सर्वाइव कर पाए. सो इसकी विड्थ भी मैटर करती है देन. यस. मींस ओके ठीक है. So entire journey in just one graph, right? Just imagine the creativity, the thought of that particular developer. 1930 के अंदर लंदन का वेब तैयार था जी. 1965 bar and line graph. 1973 Shenna faces, right, to show you the score. And here comes the
field of commemoration, the infographic history of the world. So let me open the original graph to justify. तो इस ग्राफ के अंदर है क्या, पहले वो समझ लेते हैं. The graph visualizes nearly 95 million casualties of war from 20th century. Data made available by Poly-National War Memorial make clear that war was a near constant characteristic, allowing just 2 years of peace in the last century. तो पूरी सेंचुरी से 2 साल ऐसे रहे हैं जब शांति थी, अदरवाइज वर्ल्ड में कहीं ना कहीं लड़ाई चलती है. Given the sheer magnitude of wars toll, this visualization only consider conflicts exceeding 10,000 deaths. तो यानी कि 9,000 मरे तो इसमें पार्ट ही नहीं है. Yet in the statistic form, it is still not feasible to label every conflict. The overall composition reveals patterns in the timing, duration, involvement, and human toll of war. Right? If you closely look at this graph, let me show you. Here is the interactive one. Oh, interactivity खत्म करते हुए लगता है. Just try to absorb the information which is there on the graph. I'll give you 2 minutes time. Done? So, who can explain me this graph? सबको सामने लिखा हुआ है. आप लोगों ने खोल भी लिया होगा ना ग्राफ तो. सो आपके सॉरी माय बैड, मैंने आपको नीचे एक्सेस तो दिखाई है, ऊपर ही नहीं किया. अभी देख लो, सॉरी. सो ये है ईयर, ये ड्यूरेशन इन इयर्स, राइट, एंड दिस इज स्टार्ट पॉइंट, दिस इज एंड पॉइंट. ये नंबर ऑफ डेथ इन थाउजेंड्स, जो पॉपी का साइज है उससे क्या डिफाइन होगा, नंबर ऑफ डेथ्स. और कलर क्या बता रहे हैं, किस एथनिसिटी के लोगों की डेथ किस वॉर में हुई है. तो अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ग्लोबल. सो एशियन को, इस ग्राफ को अगर एज ए लेमन में इसको देखूं तो या तो आप एशियन होंगे या अफ्रीकन है बस.
पीस दिख रहा है, पीस वाला सिंबल आपको, ये रहा छुट्टू छुटकू सा। ये 2 साल शांति रही थी यहाँ पे। सॉरी मैं पोर ड्राइंग। यस, तो अगर मुझे ये देखना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, कब से कब तक चली, कितनी डेथ हुई, वो इफ यू लुक एट दिस, कौन है ये, इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन। 64 ईयर से लोगों के बीच झगड़ा चल रहा है और अब तक 14,500 लोगों की डेथ हो चुकी थी। वहीं इन बांग्लादेश वॉर में इतने लोगों की डेथ हुई थी। एंड द साइज ऑल्सो डिड नॉट, कितने लोगों की डेथ हुई थी। तो वन ग्राफ 100 साल की कहानी एक ग्राफ के अंदर। डू यू फाइंड दिस वर्क एज अ मार्वलस? Not by me, but by the person who has developed this. 100 साल की कहानी एक ग्राफ के अंदर। Now imagine that how well he understood this data, that he is able to build this story. किसी को ये मैसेज कन्वे करना बहुत आसान है इस ग्राफ से कि देखो 100 साल से दुनिया में आग लगी हुई है, कोई फायदा नहीं है। किसी को ये कन्वे करना बहुत आसान है कि एशियन बस हर लड़ाई में नपते हैं, ये सबसे ज्यादा आग एशिया में ही लगी पड़ी है। ऑलराइट, सो वो लोगों के लिए तो बहुत बोरिंग सेशन होगा जो लोग सोच रहे हैं सर आज टैबलू चालू करेंगे, हम टैबलू में ये करेंगे, हम टैबलू में वो करेंगे। ये तो सोच के नहीं आए थे, ये क्या चलेगा। तो जितनी शांति से आप लोग सुन रहे हो ना, मेरे को लगने लगा है अब तो कि मेरे को सिर्फ टैबलू सिखा करके टाटा वाया कर देना चाहिए, वो ज्यादा ठीक है। वो ठीक है, या शुड आई कंटिन्यू विद दिस? तो इतनी शांति इस ग्रुप में मैंने कभी देखी नहीं, और दिस इज फर्स्ट टाइम दैट मैं ऑनलाइन। यस, थैंक यू अनुज फॉर एंडोर्सिंग माय थॉट। वहां इतना इजी है ना, सो इजी, बट unless you have the perspective, you know the length and breadth, you want to be able to justify that particular tool, that wonderful tool, right? So some better storytelling through data visualization. So 512 path to the White House. So they have shown this graph कि ओबामा कैसे जीतेंगे। Again, New York Times, one of my favorite. Oh, so they have, okay, so I have taken this graph from GE Healthcare site, right? Now they have taken it down from, I'm not sure why they have taken it down, but one of the finest use of data for human benefit,
आई हैव सीन फर्स्ट टाइम, राइट। मैंने मतलब अगर बोलूं कि इससे अच्छा ग्राफ एक नॉर्मल इंसान के लिए ये समझने के लिए कि उसको जो प्रॉब्लम है, राइट, मैंने नहीं देखा। सो द जी हैव, यू नो, द जी इज पायनियर इन इमेज, दिस, इन दिस व्हाट आई से, जो इमेजिंग होती है, राइट, इमेजिंग, राइट, दैट टू इनटू हेल्थ केयर इंडस्ट्री। तो जितने भी ये स्कैनर लगे होते हैं, व्हिच आर नोन एज, क्या बोलते हैं इनको, सीटी स्कैन, और पौते होते हैं, मैं तो नाम भी नहीं बता रही। सो जी इज नंबर वन कंपनी इन दैट फील्ड। So, and they have access to the data, huge amount of data. So they have developed this graph. उस ग्राफ की खूबी ये है कि the moment you click on one, for example, hypertension पर आप क्लिक करोगे, it will show you what all diseases are related to hypertension. और कितना केसेस ऐसे हैं जो हाइपरटेंशन का, इस हाई कोलेस्ट्रॉल, इससे उससे किससे क्या रिलेशन है, वो रिलेशन एंड द मैग्नीट्यूड। Right? Don't you think that this can be leveraged to help people to for medication, or to diagnose the root cause, to diagnose the other illness, right? I couldn't find, you know, the link for this visualization because they have taken it down. कोशिश की मैंने आपका वाइकम में ढूंढने की और मिला नहीं, अदरवाइज यू नो इट्स अ वेरी इंटरेक्टिव। अभी जो आपको ना 2D और ये पिक्चर की तरह लग रहा है, इट इज वेरी इंटरेक्टिव। आप किल से क्लिक करो एब्डोमिनल पेन, तो आपको बता देगा ये सारे सब चीजें की वजह से ये सारी और बीमारी होती है। नाउ इट्स वेरी इजी फॉर अ डॉक्टर टू टेक अ डिसीजन कि भाई क्या क्या रीजन हो सकता है। अभी आप डॉक्टर के पास जाओ, बड़ा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, एक पेन किलर, एक बिकासून, राइट, एक मल्टीविटामिन और एक एंटीबायोटिक, ये आपको दे दी है उन्होंने। जैसा रिस्पॉन्स आएगा उसका तो दवाई चेंज करते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं होता, वो अंधेरे में तुक्का चल रहा होता है। सॉरी अगर कोई डॉक्टर है तो बुरा मत मानना, बट हकीकत तो यही है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया ये सब? किसी को भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है? अरे बड़े अच्छे डॉक्टर आप लोगों में पहली बार में डायग्नोज कर लेते हैं। So I have one word for them: rare species nowadays. A good doctor is a rare species. It's impossible to find them. Okay, so let's talk about the future of data visualization. So the future is that data visualization is everywhere. It is everywhere now. Big data will imply more need for data visualization. So the volume, the velocity, and you know the veracity of the data do require a lot of data visualization, right, to understand it. So do you know what we call it? Big data. Big data पता है किसको बोलते हैं? जो एक्सेल में है तो उसको बिग डेटा, नहीं सॉरी, क्या जो सर्वर में रखा वो बिग डेटा और जो एक्सेल में वो छोटा डेटा, राइट, ऐसा कुछ है। एनीवन, व्हाट इज बिग डेटा अकॉर्डिंग टू यू? अब तो गूगल मत करो, हर चीज गूगल पे मैं बोलता हूँ करो करो, बट कुछ तो सोचो। व्हाट इज बिग डेटा? A large amount of data. कितना? 10 रो,
100 रो, 1000 रो, 1 लाख रिकॉर्ड, 10 लाख रिकॉर्ड, कितने रिकॉर्ड को डेटा बोल, कितना लार्ज, कितने कॉलम को लार्ज बोलूंगा? 1 कॉलम, 4 कॉलम, 400 कॉलम, 6000 कॉलम। सर ऐसा पर्टिकुलर तो पता नहीं है। Anyone else? Thank you for your honesty, Dhananjay. Any wide idea, कुछ भी आइडिया हो? सर मतलब मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स। ओके, यानी 1 मिलियन को हम बिग डेटा बोल देंगे, 2 मिलियन मतलब 9 लाख रोज लोग तो नहीं बोलेंगे। नहीं सर, मतलब बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट जो इजीली एक नॉर्मल सिस्टम जो हैंडल ना कर सके आई गेस। सो आज अपना ये भ्रम तोड़ देना, डेटा, बिग डेटा का मतलब कभी भी मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है, जिलियंस ऑफ रिकॉर्ड नहीं है। दैट इज वन ऑफ द फीचर। ओके, So again, there is no perfect definition, right? Till now, so different researchers is trying to define it differently, but the most commonly accepted definition is the 3 V's of data. जिस डेटा 3 V हो, V for victory वाला सिंबल, राइट? वन इज योर वॉल्यूम, कि वॉल्यूम बहुत हो। अब इस बहुत की कोई डेफिनेशन नहीं है कि 10 मिलियन हो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 3 V's, हेमंत जी। सेकंड इज, फर्स्ट से वॉल्यूम होगा, दूसरा क्या है? वेलोसिटी। विद अ क्लिक आपको चाहिए, क्या होना चाहिए? विद अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड आपको चाहिए। जब आप यहाँ पे बैठ के ना किसी के पिक्चर को लाइक करते हो, राइट, दैट लाइक ट्रेवल सो फास्ट, आपकी डिवाइस से कहा जाएगा? वो इंडिया में जो फेसबुक का सर्वर होगा उसको हिट करेगा, इंडिया के सर्वर से ट्रेवल करेगा यूएस का सर्वर, राइट? मान लो आपने किसी स्पेनिश सिंगर के गाने को लाइक किया है फेसबुक पे, या पिक्चर लाइक की, फिर यूएस के सर्वर से वो हो सकता है स्पेन का किसी सर्वर हिट करेगा और उसके डिवाइस पे पहुंचेगा। कितने सेकंड लगते हैं इस काम में? सॉरी, कितने महीने लगते हैं इस काम में? कितने, 2-4 साल में तो पहुंच ही जाता होगा, नहीं वो लाइक? जस्ट ऑन अ क्लिक, मतलब जितने देर में आप चुटकी हो जाओगे ना, उतनी देर में वहां तक पहुंच चुका होता है। दैट्स द वेलोसिटी। Now, the third point, which is variety, it should have variety. Now, what does it mean of variety? So, आप variety का मतलब समझो, तरह तरह का डेटा। अब तरह तरह का डेटा बोले तो आप पिक्चर डालते हो वो भी एक डेटा है, वीडियो डालते हो एक डेटा है, टेक्स्ट डालते हो वो एक डेटा है, आप लाइक करते हो, आप अरेबिक में लिखते हो, आप चाइनीज में लिखते हो, आप हिंदी में लिखते हो, आप उर्दू में लिखते हो, बुला बुला। दिस इज अ वैरायटी ऑफ डेटा। But the research is still going on. So few people are trying to define it with 5 V's, 10 V's. So one of my earlier mentors is trying to define this big data with 10 V's. पता नहीं कहाँ तक पहुंची उनकी रिसर्च, अभी काफी दिनों से बात ही नहीं हो पाई। Right? So ये रिसर्च is still going, but ये most accepted definition of big data। अब इस तरह के डेटा को हैंडल करने के लिए, दिखाने के लिए we require these tools, right? And that's the reason I have written the second thing. Technology will drive visualization in future, increasing democratization with the search of new tools. So technology will drive visualization in future. Technology तो चाहिए इस तरह की चीजों को मैनेज करने के लिए। And increasing democratization with the search of new tools मतलब
डेमोक्रेटाइजेशन समझ में आता है? डेटा पे किसी की बंदिश नहीं होगी और इजी एक्सेस होगा, पब्लिकली अवेलेबल। मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल डेटा, जिसके लिए हमें और डेटा चाहिए, क्योंकि मेरे को कभी किसी साइट से, किसी सर्वर से, वहां से डेटा उठाना है, तो उसके लिए मेरे को न्यू टूल्स चाहिए। Now interactivity will become more widespread, data will look at a wider time horizon। जो आपका विजुअलाइजेशन होगा फ्यूचर के अंदर, इंटरेक्टिविटी को ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। So if you look your current devices, Alexa, news channel, that kind of information, you know, that is interactivity. Now you are interacting with the devices. Now think about your graphs and visualization, right? So everyone want that interactivity, right? And data will look at a wider time horizon. So since again, जितना ज़्यादा उतना better. जितना ज़्यादा time horizon, you will see the pattern more easily. The last point is the message, the content, and the story will still decide the impact. The message, the content, and the story will still decide the impact. इसके अलावा कुछ नहीं है visualization. मैसेज होना चाहिए, उसमें कंटेंट होना चाहिए, मैसेज में स्टोरी होनी चाहिए पूरी। And why we need this? Because the ability to observe without evaluating is the highest form of intelligence. A May 2013 survey by Aberdeen Group finds that managers in organizations that use visual data discovery tools are 28% more likely to find timely information than those who rely solely on managed dashboard. Coding and dashboard. मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिसर्च बोल रही है। एक एग्जाम्पल और एक ऐसा कोई रियल वर्ल्ड, रियल टाइम एग्जाम्पल विच कैन विच इज कमिंग टू योर माइंड, जितना मैंने अभी बात की। कोई एग्जाम्पल जो आपके दिमाग में आ रहा हो। आजकल सर जितने भी न्यूज चैनल्स हैं वो ज्यादा क्वालिटी एनालिसिस लेके आते हैं in terms of trying to understand and explain the problem to the audience and or the people who are viewing their channel. So in a way वहाँ पे अगर हम कंपेयर करें to the times जब Sorry, डीडी और I mean sorry, आपको मैं stop करूँगा, and I was expecting the answer which Hemant has already given. okay. I was expecting this is the perfect example of big data. Volume है, variety है, variety in terms of different stocks, right? और velocity भी है, with a fraction of a second. और आप उस पिक्चर से डिसीजन ले रहे हो, आप जाके कैलकुलेट नहीं करने बैठते हो, you are just simply visualizing it and taking the decision, and that is the highest form of intelligence. वो सबको समझ में आती बहुत इजीली। मैं ये नहीं बोल रहा बाकी जो एनालिसिस होते हैं वो बेकार होते, मैं ये बोल रहा हूँ इजीली सबको समझ में आने वाली। अगर शेयर मार्केट नीचे जा रहा है, सबको लगेगा कि हम आगे डूब गया, ऊपर जा रहा है, अप जा रहा है, राइट?
And you have rightly mentioned, Anuj, that those news channels are trying to give you the intelligence with the help of visualization, which is supported by the data. To to make you feel that you are knowledgeable, you are intelligent, right? That's why they are putting those things in front of you, right? Another example. So I think people like me who have white hairs, right? They can understand this. Just remember when you were a kid and you were watching the cricket match versus today you are watching the cricket match. Just imagine what has changed over the year. Apart from that dress, apart from the cheerleaders, apart from the white lights or the what is it, flag lights or the pink ball, what has changed? तो विजुअलाइजेशन भी मतलब काफी चेंज हुआ है. So you see that they throw you so much visualization, so much analysis, right? That you feel empowered, you feel intelligent. Okay, right? क्रिकेट तो मेरे को सब समझ में आता है. अब ये होने वाला है, अब ये होगा. You know, they want to engage you with the help of those visualizations. And this is what you need to do whenever you are, you know, building your own visuals or own graphs, charts, and etc. Now, are you able to understand the the spectrum or the depth of this particular word visualization? Though it seems very simple, but it is changing the world, changing the way we are taking decisions. Let's take a break. I will give you an example right from your day-to-day life. Okay. So लेते 25 मिनट का ब्रेक जो हम जनरली ले रहे हैं आजकल. नोट पैड. See you after the break.
Welcome back after the break. All right, so let's understand the benefit of data visualization, right? So absorb information in new and more constructive way, right? So these are the few benefits. Visualize relationships and patterns between operation and business activities, right? We can create visualization which can help us to drive whether the business activities and the operational activities are in sync with each other or not. Oh, thank you. Sorry. Thank you, Anush. So there are a few, benefit which I have enlisted on this PPT. Uh, by visualizing data, one can absorb information in new and more constructive way, right? That it will help you to take note of the trend patterns, right, in more fruitful way. Visualize relationship and patterns between operation and business activities. So now you can, clearly see whether your operational activities are giving you the or your business activities are in sync with each other or not. Let me give you one example, right? So a Snapdeal, right, which used to be one of the loss-making e-commerce site, right, have used this visualization in their day-to-day business operations. So now they know, or they track each and every package with the help of visualization, right? And they can see where the particular trend is emerging. For example, if they can see there is a trend, right, for a particular retailer or whatever they call the seller, that okay, out of 10 orders, 8 are returning. So that is not good for the platform, to do that kind to do business with that kind of vendor. So they track it, they take decision on the basis of that, right? And now they are, moving towards profitability, right? Identify and act on emerging trend faster, manipulate and interact directly with data, and foster a business language, right? So the last point, which is foster a new business language, which means in your organization, everyone is talking on the same language with the help of visualization, right? So different people do not have a different matrix, different language, different jargon. With the help of visualization, you want to try to create a one single language which your visualization is showing them. For example, if you create a dashboard, right, which can be consumed by the first line or the front line employees till your CEO. So irrespective of the level, right, the definition for example, sales per dime or sales per dollar spent on advertisement or sales per letter, sales per promotion, everyone will have the same understanding, right? Now that visualization which you have developed may be inferred by different people differently. For example, CEO को तो पूरे sum से मतलब होगा, right? But an individual would only require his or her information, right? कि मेरा क्या चल रहा है,
स्कोर या मेरा क्या सेल्स चल रहा है, बट जो स्कोर कैलकुलेट होगा या जो सेल्स कैलकुलेट होगी, राइट, उसकी डेफिनेशन अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस एक ही होगी. Key elements of data visualization. So there are key elements like data, action needs data. So then the view, which means seeing is believing. Discovery, visually discoverable patterns. Story, trigger for action. Action, practical way to improve your business. If you know keep these 5 points in your mind while developing a dashboard, you will be giving some value addition to the web dashboard. So data, why you need a data? Data, that action needs data, right? कुछ भी आपको पिक्चर बनाना है, कुछ भी दिखाना है, you need that action to be supported by the data. और जो आप दिखाओगे उस पर seeing is believing, लोग देख करके बहुत जल्दी करेंगे. And what you need to discover, that you need to discover those patterns by which you can create your story for action. और action से क्या होगा? You are improving your business. Now this is a type of visualization, right? This is an overview. Scientific visualization, information visualization, and visual analytics, right? Let me directly jump on to. So these are the scientific visualization, right? Which you all have seen. Information visualization, right? The graph which I told you, the other graph. Another example of your information visualization. And this is why I told you before break that I will bring one example from a day-to-day life. So I think now it's a relevant question nowadays. मैं ये पूछने वाला था कि कितने लोग यूज करते हैं. अभी मेरे को ये पूछना चाहिए कि कितना फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, राइट? So if you ask me, I frequently use this app, and this is nothing. This is an example of information visualization, which is helping me taking a better decision or taking a decision based on the data. सब यूज करते हैं ना ये? किस लिए यूज करते हो? Which route to select, right? किस रूट से जाऊं? क्यों? So that I can optimize my travel time. अब इस विजुअलाइजेशन के पीछे क्या है? It have a lot of data. कितने जीपीएस फोन का डेटा इनके पास रहता है और गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? एक एक गली को इन्होंने मैप करके रखा हुआ है टू गिव यू more accurate data. So this contains written instruction on left and an image on right. Do you think, और कभी आपने सोचा है कि how it became a part of your life? कभी इस बात पे गौर किया आपने कि कितना जरूरी हो गया आज के टाइम पे घर से निकलने से पहले गूगल मैप पे रास्ता चेक करना? Similarly, if you create a visualize or dashboard which help your business to take a decision day in day out, trust me, you will be the most valued employee of the company.
The award which you see on this screen, right? 50% is my hard work and 50% is the role of visualization. So I help so many stakeholders when I develop this top post leadership by creating a visualization which they require, and they even did not ask me, right? हमने किसी को बोला नहीं था कि हमें Google Map दो. This was the requirement. I understand their requirement and provided them a visualization which they are leveraging day in day out to take a better decision. And that's how you can create value for yourself. So that's the power of visualization. Now visual analytics is not easy to define, right? और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने काफी रिसर्च पेपर पढ़े हैं उसके बाद में due to its multidisciplinary nature involving multiple processes and the wide variety of applications area. An early definition was the science of analytical reasoning facilitated by interactive human-machine interface. But as per my current practice, visual analytics combines automated analysis techniques with interactive visualization for an effective understanding, reasoning, and decision making on the basis of very large and complex data. Give you some time to absorb this. How do you see this graph? Do you see that it gives you the intended information and you don't require to be an expert in this field? यहां से चालू हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है क्यूबिक की तरफ और धीमे धीमे से साइज बढ़ता हुआ जा रहा है और आगे बढ़ते बढ़ते इतने जगह को अपनी चपेट में ले लेगा. Impact of visualization developed to map user reported violence in Kenya after the post-election fallout at the beginning of 2008. Now, by looking this graph, right, would you be able to take a decision where you, in which state in Kenya you should move, or which is the most dangerous, or in which particular area that one should deploy more forces, what kind of actions they did take to manage all these categories of crimes? Easy, right? And so there are a few other types of chart. The visualization chart, map, network, time series, hierarchy, flow, matrix, and infographics. So we can divide visualization on the basis of the shape and the basis they were created. I believe process and timelines you all know. Flow chart, I think you should know, or you should know, right?
because you're programming nothing is a flow chart. That on the basis of this, you are take some action. And why we need flow charts? सारे लोगों ने यूज किया होगा. Oh, हेमंत जी, bingo. But before that, what is flowchart? If I ask you, okay, process flow, yes, okay. So flowchart, right? So again, जो भी दिमाग में definition है वो बोलो. Flowchart is a step-by-step activities, step-by-step set of logical activities which is required to convert your input to an output. समझ में आया? ये चाइनीज हो गया. क्रिटिकल पाथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज होता है. लाइफ साइकिल मार्केटिंग वाले बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज है, इंट्रोडक्टरी स्टेज, ग्रोथ है, मैच्योरिटी एंड देन फॉलोड. सो टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस, राइट? द इन्फ्लुएंस ऑफ a particular thing. डिसीजन ट्री, यू ऑल नो. कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कितना ने देखा ये पहले? इसमें कुछ कमी है, बताओगे? Yes, Hemanji, it's one of the Six Sigma tool, but it plays a big role in data visualization as well. It is there, Anuj. See, it is there. What is missing? What? Man is in the form of people. Measure is missing. Measurement. Yes, sir. Right. So this shows you the cause and effect relationship, right, for a particular effect. What are the causes, right? So we divide them into 6M: man, machine, material, method, man, and mother nature, and measurement. Yes, it's the RCA tool that you can find the root cause analysis, right? Relevant visuals. This makes more sense to show a graph like this. सब हम चलो पैसे के लिए बनाया गया. The bad and ugly is for this. Now comes a stage where you need to identify the issue in the graph. So a plateau of happiness, this is being done by some human relief and values organization. So a country's wealth may not always dictate the happiness of its people. As part of World Value Survey project, inhabitants of different countries and territories were asked how happy or satisfied they were. Below is a sampling of happiness ranking along with economic status. So जिनका gross GNP per
कैपिटा है वो इस तरफ है और हैप्पीनेस इंडेक्स इस तरफ है। तो ये देखने की कोशिश कीजिए आपका पैसा ज्यादा हो पर आपका जरूरी नहीं पैसा ज्यादा हो तो आपका हैप्पीनेस इंडेक्स सही होगा। What is the thing which you don't like in it? इस ग्राफ में दो कमियां बताओ कोई भी। तो हम इंडियन कितने सही है ना इधर के ना उधर के, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। What are two things which you don't like about this graph? One is visual, another one is logical. दोनों पे बात कर लेते हैं। पहले आप just try to understand कि क्या कमी है इस ग्राफ में। सर इनको कॉन्टिनेंट वाइज थोड़ा पहले से कैटेगराइज करना चाहिए, थोड़ा जम्बल्ड अप हो रहा है। और मे बी या तो जैसे हॉटस्पॉट्स दिखा सकते थे ऑन अ वर्ल्ड मैप तो हम बेटर समझ पाते। तो एक चीज तो क्लियर है अनुज कि ये थोड़ा क्लस्टर्ड जैसा हो रखा है, राइट? यस सर। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है which is very difficult for me to take or interpret this, right? सबसे बड़ी too much information. Agreed everyone? Yes, no, maybe. आपको अगर कुछ जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन डाली गई है इतने छोटे से एरिया में, the second thing which is more logical, जब दुनिया में सबको ये पता है पैसे का खुशी से कोई लेना देना नहीं है, उस टाइम पे ये बताना और ये रिलेशनशिप का ग्राफ डिपिक्ट करना डजंट मेक एनी सेंस। जो कोने से बिठाने की कोशिश की है दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? और अगर इनको हैप्पीनेस इंडेक्स लेके आए तो GNP could not be the only factor by which they should be showing this. So if you remember, if you have seen, I believe, in the magazines where this ranking agencies publishes the ranking of B school, so they don't or they do not consider only one factor which is placement into consideration for publishing the ranking. They do consider lot many things, right? Even they consider the teacher student ratio क्या है, लाइब्रेरी में बुक्स कितना है, रिसर्च कितना पब्लिकेशन हुआ, so they do take all the things into consideration. So on the basis of GNP just showing a happiness hardly make any sense. और ये रीजन है कि हिंदुस्तान का इसको जीरो क्यों है कि ये बात तो हमारे को समझ में नहीं आती। So people who can spot the issue
will earn a digital chocolate. अब मैं physical chocolate देने से digital chocolate दूंगा. What is the issue with this graph or this visualization? Area product, okay. बाकी लोगों से भी इनपुट चाहिए. अभी नहीं. Nope. क्या गड़बड़ लग रहा है ग्राफ में? लगता है लोगों को नाम लेके बुलाओ. Numbers is quantity. What is wrong? Quick. जो दिया है उसमें क्या गलत है? जो नहीं है वो तो भूल जाओ. जो दिया है उसमें क्या गलत है? हेमंत जी आप बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं. धनंजय देखने में क्या गड़बड़ लग रहा है? देखने में बाकी लोग देवेश, मूमल, नेहा, क्या गड़बड़ है इसमें? इतना सुंदर है. सारी चीजें तो क्लियरली दिख रही हैं. फिर क्या गड़बड़ है? विदिशा, डेटा इज. आरुषि क्या कहना चाहते हो? थोड़ा क्लियर करो. धनंजय थोड़ा और सोचो क्या गड़बड़ है. बिल्कुल पास पहुंच चुके हो. बोलना भी तुम वही चाहते हो लेकिन लिखने में थोड़ा सा. आरुषि आपने जो लिखा है वो चेक करोगे मैं क्या लिखा है? कहाँ है? रैंक तो कहीं है ही नहीं. अनुज यस नॉट एग्जैक्टली डिफाइन का मतलब क्या धनंजय? सर मतलब जैसे इसमें नंबर सेल्स वर्ल्ड वाइड दिया हुआ है तो ये इसने अमाउंट कंप्लीट नहीं लिखा. हाँ कंप्लीट में क्या कमी है? कंप्लीट में क्या कमी है? सर अपर लिमिट डिफाइन नहीं करी. अरे लिमिट क्यों दिखा नहीं? एग्जैक्ट नंबर है ही नहीं जो आरुषि बोलना चाह रही थी. डेटा इज नॉट एग्जैक्ट. दिस प्लस मतलब कितना? 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन, कितना? सर अपर लिमिट नहीं, मतलब रेंज नहीं है. मैं कैन तो यू नीड टू डिफाइन एग्जैक्ट नंबर. राइट. अरे बाबा मतलब नंबर देखा तो एग्जैक्ट लिखा. फेल हुआ है वो नहीं पता लगेगा इससे किसी को. राइट. क्या सीएल है किसी को नहीं पता. यस सर.
किसी को पता क्या सेल है? किसी को नहीं पता। नंबर ऑफ सेल्स में 750 प्लस कितना, 2 4 6 8 10 15 20 50। अरे आपको पता किस लिए प्लस है? प्लस है तो फिर काउंट करके बताओ, नंबर फिर क्या किस लिए? राइट। सो जो प्लस है वो इसमें गड़बड़ है पूरा। So this is not giving a clear picture, right? This plus symbol. Now summarizing the bad analysis where data visualization can go wrong, the life factor, the data flow. So always remember, और खास करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर यू शुड रिमेंबर, जो आपने प्रेजेंट किया दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। अगर ईमेल आपकी मेल बॉक्स से गई है दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और को आप ब्लेम नहीं कर सकते। सो डेटा फ्लॉज यू नीड टू चेक बिफोर फाइनलाइजिंग और पब्लिशिंग योर डैशबोर्ड टू एनीवन। The missing context, no explanation or of trend. Second, कोई ट्रेंड के बारे में बात नहीं करना, कोई कुछ बात नहीं करना। फॉर अगर मैं पिछले डैशबोर्ड में हूं, एक प्लस के अलावा देयर आर सो मेनी थिंग्स। ठीक है, 10 लाख की सेल, मानो 100 मिलियन का सेल है, बट इससे इंफॉर्मेशन क्या इन्फर करूंगा? अगर ऐसा होता है कि पिछले साल से कंपेयर करके नंबर दिखाया होता, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिखाए होते, हमने कितने बढ़ा लिए, डोंट यू थिंक दैट विल मेक मोर सेंस? यहाँ से कुछ आपको नहीं पता कि किस बिजनेस के बारे में बात हो रही है, राइट। आप कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हो इसके बेसिस पे, या कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो अलग। तो कॉन्टेक्स्ट इज मिसिंग। भाई इस नंबर में करूंगा क्या? इंफॉर्मेशन लेस इन्फोग्राफिक्स, पिक्चर बना के रख दी, कुछ राइट डेटा है ही नहीं। ओवर बिल्डिंग, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर, और जो गलती होती है नए लोगों से वो यही होती है, राइट। ओवर बिल्डिंग, ओवर बिल्डिंग का मतलब जिस चीज की जरूरत है वो भी जबरदस्ती देना उसके। गूफ डाउन ग्राफिक, ट्रेंड को पाई चार्ट पे दिखाना, राइट। डिस्टिंक्ट कैटेगरीज को लाइन ग्राफ में दिखाना। सो गूफ डाउन मतलब मिक्सअप, किसी का कुछ करना, किसी का कुछ करना। इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट गिव इनसाइट, क्या इंफॉर्मेशन देना? दैट डज नॉट गिव इनसाइट, ओवर एम्फेसिस ऑफ विजुअलाइजेशन, कलर भर के रखे बतेरे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता उसको, तो किस पे जोर दिया? विजुअलाइजेशन पे, लेकिन इंफॉर्मेशन पे नहीं हमने जोर दिया। And now tips for effective data visualization: keep it simple, right? Why we need to keep it simple? Because it should be understandable for non-technical people as well. आज मुझे समझ में आते हैं नंबर, जरूरी नहीं है हर किसी को उसी फॉर्म और शेप में नया चीजें समझ में आए। As Albert Einstein has mentioned that if you can't explain simply, which means you don't understand it well enough, तो आप खुद को खुद ही समझ में नहीं आया। Tips for effective visualization: how do humans like their data? Orient data so people can read it easily. Don't you think right hand वाला ज्यादा better है as compared to left hand one?
Just see good and better. Make sense? Now, which one is better? A or B? Right? Simple. You can make. आपको देवेश why A? देवेश बहुत बड़े कलर दिख रहे हैं ना इसलिए बी है नेहा सॉरी नेहा बी यस सर। ए क्यों सब चीजें अलग सर अलग इसके अंदर हाँ सर, सर वो सब कुछ दिख रहा है सर इसके अंदर। आपको पता है इस लाल बार को समझने के लिए, समोसा को समझने के लिए मेरे को दो जगह देखना पड़ेगा, एक इस जगह पे, एक इस जगह पे। हाँ सर, लेकिन बट क्लियर है सर बिल्कुल। इसके अंदर अपन फिर भी थोड़ा सा कहते हैं ना, अपन ये पता नहीं कर सकते कि अपन एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कर सकते। इसमें एग्जैक्ट नंबर आ रहा है अपने सामने। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर के बावजूद भी मैं इनको कंपेयर नहीं कर सकता। यहाँ साफ कंपेरिजन दिख रहा है, समोसा दिस मिंट देन जो भी ये नाम मैं थोड़ा हाँ छोटा सर, कंपैरिजन में अपन देख सकते हैं मगर अपन हाँ यस सर। दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन है व्हाट इज फेवरेट गर्ल स्काउट कुकीज? फेवरेट कौन सी है? क्वेश्चन देखो, टाइटल पढ़ो। कि क्या पसंद है तो जरूरी 64 बताना। नो सर, हाँ कंपैरिजन तो ये बेटर बता देगा सर। यस सर। ठीक है, तो मेरे को कंपैरिजन फेवरेट क्या है बताने के लिए दिस इज परफेक्ट ग्राफ, राइट? बिल्कुल सर, चार्ट भी। ए और बी? ध्यान रखना मैं कुछ गलत भी लिख सकता हूं, सो डोंट गो बाय माय आंसर, टेक योर डिसीजन। आपको क्या पसंद है? All right, so I got a maximum response for A, but let me tell you, तो ये ग्राफ क्या दिखा? सेल्स मीटिंग टारगेट, तो टारगेट जहां मिसिंग है वो रेड किया हुआ, जब मीट क्या इक्वल हो गया वो ब्लू किया हुआ, राइट? नाउ इफ यू वांट टू शो डिस्टिंक्ट थिंग, राइट, आपको क्या सिर्फ 3 बार डिस्टिंक्टली दिखाने हैं, तो डिस्टिंक्शन डार्क से लाइट के कंपैरिजन से अच्छा, डार्क विद लाइट कलर कंपैरिजन तो ज्यादा अच्छा। तो आपको जो ऑरेंज कलर निखर के आ रहा है, जो साफ बगैर किसी और को देखते हुए नजर आता है, वो सेकंड चार्ट है, because we want to highlight only these 3 categories। तो कलर का जो काम होना चाहिए उन 3 कैटेगरीज, यहाँ पे डार्क कलर मेरे को ब्लू लग रहा है, हाईलाइट मेरे को ब्लू दिख रहा है, that's why chart B is better than chart A। You can contest, right, that you still like A? Okay, सर विजुअली दिखने में तो ए बेटर दिख रहा है सर। हाँ बट अगर डिस्टिंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो बी बेटर लग रहा है। so कि अगर exactly, जो
जो टारगेट्स मीट नहीं हुए अगर उनको हाईलाइट करना है तो बिकॉज यस, बाकी सारे वो डल बैकग्राउंड में आ गए। देखो अगर आप ऊपर जाओगे क्या लिखा, सेल्स टारगेट, सेल्स मीटिंग टारगेट्स, राइट। Okay. तो दिखाना क्या होगा आपको, सोचो आपको कुछ मैनेजर, आप क्या दिखाओगे, ये दिखाओगे ब्लू वालों को, फोकस ना होगा, पीपल हु आर मिसिंग, राइट। तो तो हाफ फुल मेरे और हाफ ज्यादा एम्प्टी। हाई वोल्ट किसको मिलना चाहिए, इन 3 बार को। राइट सर, जहाँ टारगेट मीट नहीं कर रहा। तो वो डिस्टिंक्टली कहाँ नजर आ रही है, एकदम साफ नजर आ रही है। मैं इस बात से एग्री कर सकता हूँ कि ये कलरफुल है, नॉट टू मेक अ कलरफुल ग्राफ। राइट सर, उसमें दोनों पे फोकस रहता है, इस पे ऑरेंज पे सिर्फ ज्यादा और रहेगा सिर्फ क्योंकि एक पे फोकस रहेगा। that's why we are saying B is better than A। और हम लोग जो गलती करते हैं वो यही करते हैं जो अभी हम सब सोच रहे हैं। अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं, कलर तो देखने में सर ए वाला ही अच्छा लगता है, मेरा मेरा भी दिल करता है ए वाला अच्छा लगता है, बट मेरे अच्छे से ज्यादा जरूरी क्या है, मैसेजिंग। सर अगेन ये सब्जेक्टिव हो सकता है, किसी को पसंद आए किसी को ना आए। पसंद देखो, मैं या अगेन जो यही, आपका बहुत इसीलिए फैन हो। मैं ये सुना था, पसंद ना पसंद की बात नहीं है, राइट। यार किसी को तो कोई बोलेगा कि कोई ऑरेंज पसंद नहीं, इसको लाल करो, कोई बोलेगा इसको हरा करो, राइट। सो मैं कलर पसंद ना पसंद की बात नहीं करूं, मैं बात करूं इंप्रेशन की। व्हाट यू आर गेटिंग इंप्रेशन आउट ऑफ इट। हेमंत नहीं जी बॉस से यही कहते रहते हैं। वो वही कहने का पॉइंट है कि विजुअलाइजेशन उनके रिस्पेक्ट में हमेशा यही होता है। हाँ, लेकिन एज अ गुड विजुअलाइजेशन और विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट, अब ये कलर तो जरूरी नहीं ऑरेंज और ये ग्रे लेने हैं आपने, राइट। सो द इंटेंशन इज द डिफरेंस बिटवीन योर हाइलाइटर एंड योर लो लाइटर should be distinct enough। मतलब किसको आप फोर प्ले में रखना चाहते हैं, किसको आप बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं, बस। बैकग्राउंड में आना, ठीक है। दोनों में इक्वल टोन नहीं होना चाहिए कलर का, राइट। मुझे लगता है सिर्फ मेरे बॉस ऐसे हैं, लगता है सारे लोगों के बॉस ऐसे हैं। ऑब्वियस चॉइस इज बी, राइट। यहाँ तो किसको डाउट होना चाहिए। सो दिस इज स्टडी बाय एचबीआर हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, सब लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते ये समझ लो। गॉड, खुदा, भगवान बोला जाता है बिजनेस वर्ल्ड के लिए हार्वर्ड को। और फिर ने बड़ा मस्त रिसर्च पब्लिश किया हुआ, यूज विजुअल टू इफेक्टिवली टेल स्टोरी अबाउट डेटा, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आर्टिकल बाय Jim Stickler suggests a few pointers to help create a story through your data visualization. And 86.4% of people will believe any data you put in a PowerPoint slide, even if you just totally made it up to prove your point. That's the power of visualization. हेमंत जी एग्री करोगे इस बात पे, कैसा होता है रियल लाइफ में भी। So that's the power. Okay, to choose the right visualization to convey your data accurately,
Bar graph should be used to compare data. Pie chart to analyze portion of a whole. Line graph to show statistics over time. Icon represent data and infographics to convey larger amount of information. And the last thing, right chart depends on the data and the objective. I will share this PPT with everyone. You can go through this slide which I am just skipping. So remember, changing the scale of access provide different insight. इसको मैंने तोड़ा तो ये नजर आ रहा है और इसको छेड़ा तो ये नजर आ रहा है. So access को change करने से you can get a different insight. So color perception is relative, not absolute, right? तो ये फर्क करना बहुत मुश्किल है. उससे अच्छा होगा you provide consistent background. वंडरफुल ग्राफ, बहुत अच्छा लग रहा है ना देखने में, बहुत सुंदर. व्हाट अ कलरफुल ग्राफ. बॉस को बनाऊंगा खुश हो जाएगा यार, कितने सारे कलर यूज किए मैंने. वाओ. बट यू नो, ह्यूमन ब्रेन कैन ओनली डिस्टिंग्विश ऑन अप टू 8 कलर. कितने कलर में समझ में आ सकते हैं? 8 कलर या तो बतेरे हैं. Now the dashboard should pass the 5-second test. समझ पाओगे इसको 5 सेकंड के अंदर? So you should create a dashboard that should pass the 5 second. 5 सेकंड के अंदर समझ में आना चाहिए सामने. That's it. Again, no hard and fast. 5 या 10 भी हो सकते किसी केस में, but subjective again, right? But the intention is that it should be easy enough that person need not to put so much time. Interest ही lose हो जाए. So most important, you go the top or top left. Legends go near the view. Avoid using multiple color scheme on a single dashboard. तो एक ही कलर स्कीम रखने की कोशिश करो. Use 5 views or fewer in dashboard. तो ये व्यू कितने चाहिए? 1, 2, 3 या उससे कम, मतलब 5 या उससे कम. Not more than that. And remember this quote by John Petty. Right. So with this, I am done for today. Do you have any question? सर टैबलू सीख रहा था, ये कैसे कर दिया? क्या बात कर रहे थे आप? So टैबलू सीखने के लिए, right? So just to give you a little context, I have a specialized program on visualization in my recorded videos. से बोलूँगा नहीं, in one of my place, और I charge very heavily for this course. And जो लोग आते हैं, जो सबसे टॉप पोस्ट डेजिग्नेशन होती है ऑर्गेनाइजेशंस की, उन लोगों के लिए मैं कोर्स रन करता हूँ. जहां से लोग स्ट्रेटेजिकल डिसीजन मेकिंग करते हैं. हाउएवर ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा होता है. We do a lot of exercises as well, but
जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सारांश है, वो मैंने आपको बता दिया। राइट, Tableau is very easy tool, right? We will learn it to, कल हम उसको बात करेंगे। So उससे पहले आपको कुछ हाउसकीपिंग आइटम या बोला जाए कुछ काम करने होंगे, वो आपको बता देता हूँ। So tableau.com पे जाकर के अपना साइन इन, या मैं तो साइन इन, आपको साइन अप वाला ऑप्शन आएगा। कहाँ गया, चेंज कर दिया ना फिर से। ओके, गो टैबलू पब्लिक पे जाके अपना प्रोफाइल बना लेना। राइट, ईमेल डाल के डाउनलोड, मैं तो लॉगिन हो जाएगा सीधे, आप वहां से ऐप डाउनलोड कर लेना टैबलू। राइट, जब है डाउनलोड द ऐप, वो कर सकते हो। राइट, सिंस मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो आपको 10 GB तक के विजुअल स्टोर करने की परमिशन देता है टैबलू। ठीक है, सो इतना आपको कल करके आना है कि एवरीवन शुड हैव दिस इन देयर मशीन। जब आप इसको ओपन करोगे तो ऐसा दिखेगा आपको टैबलू। एंड वी सर विल, कोई पर्टिकुलर वर्जन है सर जो हमें वी हैव टू? वो लेटेस्ट ही मिलता है आपको। ओके सर, राइट, ओके सर। कल हम कुछ डैशबोर्ड बनाएंगे। हाँ जी, सर इसके अंदर मैंने पहले एक बार देखा था टैबलेट के अंदर, तो इसमें कुछ टाइम लिमिट होती है ना अपने पास में? वो ना देवेश, ट्रायल वो वर्जन इसके लिए होता है ना होती सर ये? है, वो इसके लिए होती है। एक सेकंड, और 14 डे का लाइसेंस मिलता है आपको। राइट, व्हेन यस यू सर। डाउनलोड, वो व्हेन यू डाउनलोड दिस टैबलू डेस्कटॉप, साइड ही चेंज कर दी उन्होंने जो। तो हमें क्या मतलब सर, वो एक बार थोड़ा सा बताएंगे हमें कैसे करना है, मतलब जो अपन लाइफ, मतलब लाइफ टाइम या फिर मतलब कितने के लिए? लाइफ टाइम तो देखो जी, पैसे देने पड़ेंगे हर साल। तो मैं जो बता रहा अच्छा, हूँ वो मैक्सिमम टाइम लाइफ क्या टाइम रहता फ्री है है। सर? ओके जो सर। मैंने बताया ना वो लाइफ टाइम फ्री है अच्छा अच्छा टैबलू। सर, एक बार आप थोड़ा बताएंगे दोबारा से? हाँ, टैबलू, TABLEAU, और लिखना पब्लिक। ठीक है, इसमें जाकर के आईडी डाल के डाउनलोड कर लेना है आपको, बस। आपने टैबलू पब्लिक डाउनलोड करना ओके है ओके ऐसे। सर। ओके सर। ठीक है, ऑलराइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। अनुज, कल एक बार ना फोन कर देना 1 बजे, सॉरी 12 बजे, राइट? ठीक है ना, मैं लॉग इन कर लूंगा जल्दी कल, जो क्वेश्चन है आपके उसके लिए। ओके जी, बाय आईडी बाय, सेम टेक रहेगी केयर। सर? एक्सेस आईडी सेम वो रहेगी सर? ऊपर ऊपर वो उसी वक्त पता करना पड़ेगा। ओके सर, मैं आपको मैसेज कर दूंगा सर, आई ड्रॉप अ मैसेज। थैंक यू सर। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।